वेट मैं चैट खोल लूँ। ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है? ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे डीपी के थोड़े और आगे क्वेश्चन। वेट लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई गेस इट इज विजिबल। ओके। तो हम करने वाले हैं आज, ये हो गया था, ये कर लिया था मैंने। नाउ वी आर ऑन टू दिस। ओके। वेट, एक वाइट बोर्ड और खोल लो। Let's see what is the question saying. You are given an array of words where each word consists of lowercase letters. Okay. Word A is predecessor of word B. If and only if we can insert exactly one letter anywhere in word A without changing the order of the other characters to make it equal to word B. Okay. Okay. जो वर्ड 1 है वो वर्ड 2 का प्रीडेसेसर तभी कहलाएगा जब मैं वर्ड 1 में एक कोई लेटर मिला दूँ। ओके। एक कोई लेटर मिला दूँ, विदाउट डिस्टर्बिंग इट ऑर्डर, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, और वो जो है वर्ड 2 बन जाए, तो इसे हम बोल देंगे उसका प्रीडेसेसर। ओके। फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ए बी सी इज predecessor of a back, while C B A is not a predecessor of D. Okay, fine. Insert exactly one letter. Okay, we can only insert one letter. ये एक ही होना चाहिए। ओके। लाइक ए बी सी, जो है इट इज ए प्रीडिसेसर ऑफ अ बैक। ओके, नाइस। वर्ड चेन इज सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स विद के इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। एक वर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। वर्ड आई इज प्रीडिसेसर ऑफ, ओके, a single word is trivially a word, ठीक है। written in the length of the, ठीक है। एक सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, int n is equals to words dot size, ठीक है। first one then later one, ओके, ये ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो जैसे कि अपनी ये वाली एरे ले लेते हैं।
ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए है, देन बी है, बी बी ए, ओके, देन बी सी ए, बी डी ए, ओके, एंड बी डी सी ए। हाँ, तो अगर हम देखें इसे, ठीक है, एक सेकंड बस, ओके, अभी हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इन सब का प्रीडिसेसर होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये या तो इससे ये सारे बन जाए, ठीक है, या फिर अगर मैं इस पे हूँ तो ये जो है ना इन सब से बन जाए। बात तो एक ही है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। इससे ये बन जाए, ये सारे इसमें कन्वर्ट हो सके, है ना। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये सारे इसमें कन्वर्ट हो सके, ठीक है, तो वी कैन कंसीडर इट, ऑलराइट। तो अगर अभी मैं ए पर हूँ तो ये तो है, ओके, दिस इज ओके, ठीक है। अब मैं बी पर हूँ तो जो बी है वो ए से बन जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एक प्रीवियस लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, इतना समझ आ रहा है, प्रीवियस मच्छर गिरा, एंड माय करंट इज हेयर, ओके। तो जब इन दोनों की लेंथ ही इक्वल है तो मैं इसमें इंसर्ट करके कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें क्या बोल रखा है कि वर्ड वन में जब मैं एक लेटर ऐड करूँ तो वर्ड टू बन जाना चाहिए, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ऑर्डर, ठीक है। सब सबसे अभी तो यहाँ पे इंसर्ट की बात ही नहीं आती, हमें कहाँ इंसर्ट करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी तो इंसर्ट करने की बात ही नहीं, ठीक है। इफ देयर लेंथ इज इक्वल देन वी कैन नॉट इंसर्ट इट, ओके। सो इफ इसकी लेंथ वन है और हमें इसे वन, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ओनली वन, लेंथ ऑफ वन से लेंथ ऑफ वन में ही कन्वर्ट करना है, so we cannot add anything to it, then only it is possible, okay. But there is one possibility that what if their length is equal, okay, b is not coming here, what if the word is okay, we will call it predecessor only if and only if there is no chance of equal, we have to add something, okay. So for this it is not possible, okay, ठीक है। for this also यार एक सेकेंड, इसके लिए आंसर कितना है था अपना वन, इसके लिए भी एक ही खुद ही आंसर रहेगा, वो होगा वन, ठीक है। अभी मैं आ गया बी है, अभी के लिए इसका आंसर वन रहेगा। अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ओके ओके ओके, इफ आई एम हेयर दिस इज माई करंट एंड दिस इज माई प्रीवियस, ओके। सो इफ आई हैव टू चेक whether I can make it this, for making it like that, first of all the length by which they should differ is
mm, all this a word chain is sequence where word 1 is a predecessor of word 2. Okay, it has to be only for word 2. Then word 2 is a predecessor of word 3. Okay, okay, sorry. I thought this is word 3. Okay. Let's see, start again. Okay. We have to check for only the previous. Okay. Okay, okay. I understood it. Okay. It is one, it is one, it is also one, it is also one, it is also one, and yes. Okay, so when what I have to do, W1 is a predecessor of W2 if and only if I can make word 2 from word 1 by adding a single letter. Okay, and it is compulsory to add a single letter. Fine. So if I see our first two letter A and B, I cannot make A to B by adding anything. Okay. So if wait, so what I can say is my I will move from 0 to n. Okay, and there is a prev which will move from 0 to n minus 1. Okay, नेटवर्क गया क्या? back. 0 to n minus 1. ठीक है. Please remove that. So if I am here at first, okay, my I is here, then my prev is at equal to 0, but it should be less than n minus 1, so it won't run. Okay, it would remain same. इसे रहने देते हैं, इसे लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है आई गेस, बट या फिर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, नीचे भी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ. I is equals to 0 till n, prev is equals to 0 till n minus 1. Okay, and so when I will be here, it is not possible if their length is equal. If I am saying that it is the previous of it, fine. Okay, let's move now. First I am here, okay, and now I am here. This is my current and this is my previous. I am saying that can you be my previous. Current is asking can you be my previous. uh, it checks, it tries to check by what, by having what, mm, by checking difference, by difference. Okay. Yes, we can make it from it by just adding a single letter, because इसकी length जो है वो 1 है और इसकी length जो है 2 है. Now the thing is that they should have a one common character. Okay, for that we have longest common subsequence. We'll move to it. Let's see how we will manage it. Okay, so currently it says yes we can have a, so I will update it to the 2. Okay, I picked 1 and 1 plus 1 is 2, assuming that we are able to check that how much letters are there in common. Okay, now previous will come to 8. Okay, previous will, it will be also 1 plus 1, it will also give 2, but it is already 2, so it won't matter. Okay,
अब हम मूव करेंगे आगे. I will be here now. Okay, एक बार इसकी constraints देख लेते हैं. 1000, yes, it is smaller, that's why. Now we can, I guess we can think of finding common subsequence length. Okay. If I am here, okay, I checks for here. It won't be possible because the difference is too same for here. And when I will come here, it will ask how much is the longest common subsequence. It says 2, it says 2. So yes, we can obviously put in subsequence order matters. So yes, we can use the longest common subsequence, right? So इधर से 2 आया, इधर से 2 आया. So yes, we can do it for sure. ठीक है. This is like 1 1 2 2 अगर ये sorted manner में है तो. We can also have a case where it says okay, we have to sort them like we have to sort them क्या बोलते हैं इसे, we have to sort them lengthwise at first. Okay, so what do we got? Sort lengthwise. Okay, I is equal to 0 till the end. Okay, prev should be moving 0 0 to I minus 1. Okay, if length difference 1, then find LCS. Okay, it is like that. एक बार सर्च करते हैं. How can we sort vector with strings lengthwise? We can do it directly. I wanted to strings to string length. Given an array which needs to be sort by length. Okay, we do have a feature now. Yes, I was searching for it only. या फिर वो बना रखा फंक्शन ये. अच्छा, स्टेबल सॉर्ट. How is it working? Introducing attend
इसका मेन आइडिया क्या है? बेस्ट ठीक है। ओके, अगर देखा जाए तो we have understood the main thing, I guess so. It is that simple, and we have to find the LCS. और LCS का मतलब भी क्या ही है इसमें? If we have a BA and here is B, then it should match it. Then there should be matching in it, no? कहीं पर एक का ही गैप आएगा, ठीक है? जैसे कि मैं अपना एक ये BA ले रहा हूँ और एक BCA ले रहा हूँ, ठीक है? So we will be matching these two and we move forward. If it doesn't match, then I can take it to the next. Alright, there is no need of LCS. If I am here at BCA, I have to just manage this shit only one time. If it is happening 2 times, then we can just return back and say no, it is not possible. Here, here, then I came here, came here. If it is not equal, okay, so I can go there. It doesn't matter whether it has its here or not. What if, wait, what if D is here? Then it is not possible. I have to find this in this, right? So I have to change only in this, right? इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है ना, सही बात है। जैसे अपने पास ये है B D A एंड ये रहा है B D C A, तो ये तो इसके अंदर एज इट इज़ एग्जिस्ट कर ही रही है, बस एक लेटर है कहीं पे, तो ये दोनों मैच कर गए, ये दोनों मैच कर गए, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो आई हैव टू चेंज दिस। और अगर मेरे को 2 बार अगर इसे इंक्रीज करना पड़ रहा है, लाइक 2 बार ही अनइक्वल आ जा रहे, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, राइट। Another thing is about sorting. How do we sort them? Mm-hmm. What what will happen if I apply sort on vector string? It is doing this now, okay, lexically, no, we don't want it to do lexically. No. Mm-hmm. Okay, we need to do this, no problem. I am writing the main logic. I have to add a here sort statement. Okay,
let me do the other work than this. वेक्टर क्या रहेगी, इंट रहेगी, एक डीपी रहेगा, सिर्फ लेंथ देनी ना हमें तो, और अगर लेंथ देनी तो क्या देखते हैं। ठीक है, यो तौर वेलकम टू द स्ट्रीम तौरविन भाई, कैसे हो आप? याद दिख रहा था मैं लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन का क्वेश्चन। आपको पता है कि सॉर्ट कैसे करते हैं, लाइक वेक्टर स्ट्रिंग टाइप वाली को वी हैव टू सॉर्ट इट, क्या कहते हैं, लेंथ वाइज एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ये हो ही है इसका मेन पार्ट, बस ये मेरे को सॉर्ट वाला नहीं पता, तो अभी मैं वो वाला लिख रहा हूँ, वो देख लूँगा मैं अगर नहीं आएगा तो मेरे को। और बताओ क्या चल रहा है? बुला दिया यार आपने, कॉमा 1 कॉमा, और do we need a hash? No, we don't have to print it, we have to just count the longest, right? एक सेकेंड, ना भाई नहीं पता आपको, कोई नहीं। आप क्या पीछे चल रही है स्ट्रीम बहुत, इतना डिले कैसे आ रहा है? बढ़िया है भाई, चल रहा है अपना भी। हॉस्टल आ गया मैं आज। और इंट prev equals to 0, so we have some statements। अगर हमारे वर्ड की लेंथ इक्वल है, कहा गया अगर वर्ड की लेंथ इक्वल है देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इफ हैव टू मेक word 2 from word 1 by adding a single letter and we have to add it। आपको ये क्वेश्चन समझ में है? आपने कर रखा है, मतलब आप अगर खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा सही है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा मैं। ये अगर उनकी लेंथ इक्वल है, मतलब उनकी लेंथ का डिफरेंस जो है 1 आना चाहिए, देन ओनली वी हैव टू परफॉर्म समथिंग। ओके, लेंथ कहाँ गई मेरे वर्ड्स ऑफ आई, आयत वाला हमारा बड़ा होगा, आयत वाली अगर मेरे को बी ए से, चलो भाई आप करो मैं थोड़ा टाइम आ जाता हूँ। ओके भाई, बाय बाय। बी ए से मेरे को बी सी बनाना है, ठीक है। सो एक तो लेंथ का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये मेरा आई है, ये मेरा प्रेव है। ओके, सो मेरे को अगर पी से आई बनाना है तो ऑब्वियसली आई की लेंथ ज़्यादा होगी और पी की कम होगी, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। ओके, वर्ड्स ऑफ आई डॉट लेंथ माइनस वर्ड्स ऑफ प्रेव डॉट लेंथ should be equals to 1। this is the main logic here। okay, if this is happening, if this is like satisfied, then what I have to do, I have to traverse BA and simultaneously BCA। okay, so if I have to make this into this, ये मेरे को इससे ये बनानी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पूरी इसके अंदर कंटेन करेगी, ठीक है, और एक ही सिंगल लेटर ऐड करना है, तो मतलब इसके अंदर एक ही चीज़ जो है एक्स्ट्रा है। तो what I can do is I can keep a pointer,
int x1 is equals to 0 and int x2 is equals to 0. This is like for checking okay, this is also only 16, so it will be 64, and the outer one, this is 10 to the power 6 n square. The inner checking would be 16 into 16, it would be 256, I guess. Fine, not a big number. I have to compare these now. तो ये क्या होना चाहिए, एक बारी एक अनइक्वल चलेगा. ओके, int unequal is equals to 0. While x1 is less than ठीक है, मेरे पास 3 वेरिएबल है. अगर x1 जो वर्ड्स मीटिंग की लेंथ हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, w1 would be the length of words of I not length w2 words of prev not length. w1 minus w2. Right. Now what? x1 should be less than 8 and then x2 should also be less than word 2. Okay. Okay. अगर वो दोनों इक्वल है, okay, if अगर उनकी स्ट्रिंग इक्वल है, ये तो इनकी लेंथ. ओके, और भी लेते हैं, वर्ड भी हम एक्सट्रैक्ट कर ही लेते हैं. स्ट्रिंग word 1 would be equals to word of I, comma word 2 would be equals to words of words of prev. Okay, that's it. So if if I am here 0 0, so if they both are equal, if word 1 का x1 is equals to word 2 के x2 से, what we have to do, x1 plus plus and x2 plus plus. Okay, that's it. If they both are unequal, else if they both are unequal, ठीक है. ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अनइक्वल है, तो उसमें बस मुझे x2 को प्लस प्लस करना है. ठीक है,
और साथ में अनइक्वल को भी, अनइक्वल सिर्फ और सिर्फ एक चलेगा, अनइक्वल को भी कर दिया प्लस प्लस। एंड आफ्टर डूइंग दिस if I finds that if मेरा अनइक्वल इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है या फिर ये प्लेन 1 हो जा रहा है, दिस मेक्स मोर सेंस, ब्रेक कर दो, ठीक है, फाइन। ये तो हो गया अगर लेंथ 1 है और हमें इसी पे मेन फोकस रहेगा अपना, ठीक है। अगर लेंथ 1 है, लेंथ 1 है, ठीक है, अनइक्वल जो है 1 से बड़ा अगर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ओके। एंड आफ्टर दिस and here it is here, okay. So what I have to do, and if it is 1, okay, it is for convertible, yes. Now I have to pick it value, pick the value of it. What I have to do, if unequal is equals to 1 नहीं, after coming back if I finds that unequal ज़्यादा हो गया, if unequal was 1, okay, अगर unequal 1 है तो मैंने कन्वर्ट करा था unequal 1 ही होगा, ठीक है। और जब वो 1 था और वो 1 था तो मेरे को चाहिए, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो डी ऑफ आई वुड बी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ डी ऑफ आई कॉमा 1 प्लस डी ऑफ ब्रेक, alright, and with this I need a maxi variable int maxi equals to 1 तो हो गई होगा आंसर, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी db change what I have to do is maxi will be equals to max of maxi comma db of I, and what I have to do it and maxi, okay. Let me just verify, let me verify, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, और ये भी देखना है कि कहाँ गया ये, यहाँ पे क्या करना है, ओके, वेट,
got this. We got this. How to sort it? Okay. At first we will be sorting it, and instead of solving this all logic here, what we have to do is we have to solve it into a function. Okay, it would be more cleaner. Okay, compare, कौन सा वर्ड कंपेयर करना है? तो words of I and words of brev. Okay, we have to compare. ये जो है ट्रू आना चाहिए, and okay. What else should be there? dp of brev plus 1 should be greater than dp of I. Okay, अगर ऐसा होता है, so what we were doing, dp of I is equal to dp of f plus 1. Okay, अगर ऐसा है तो now we have to write the compare function that we were doing there. Okay, pool compare, तो पहला वर्ड आएगा string one comma string and stu. ठीक है, दो वर्ड आ गए अपने पास, s1 और s2. s1 अपने पास आगे वाला, s2 is brev. Okay, this is I and this is brev. Okay, alright, so obviously it would be bigger, right? I have to make s1 from s2 int index 1 will be 0, index 2 is equals to 0 0. सबसे पहली बात, अगर s1 डॉट लेंथ माइनस s2 डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो पहले ही रिटर्न कर दो फॉल्स. ठीक है, अब क्या करना है, while index 1 is less than s1 dot length. Okay, and index 2 is less than s2 dot length. एक केस ऐसा आएगा, if s1 of index 1 equals index 2. Okay, अगर ऐसा है तो int unequal is equals to 0, तो इंडेक्स 1 भी प्लस होगा, इंडेक्स 2 भी प्लस होगा. बट अगर ऐसा नहीं है, अगर अनइक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ
इंडेक्स वन प्लस प्लस होगा क्योंकि वो अपना अपना बड़े वाला वर्ड है। ओके, और साथ ही साथ अनइक्वल भी प्लस प्लस होगा। इफ unequal gets greater than 0 greater than 1 then also return false। फासिल नहीं। क्या बट अगर while उसमें लेट ज़्यादा हो सकता है ना, while index 1 is less than s1 dot length। ओके, अगर ये अभी भी नहीं हुआ होगा तो हमें करना है इंडेक्स 1 को प्लस प्लस करना है, वो तब ना हो चुका ऑलरेडी, और अनइक्वल को प्लस प्लस करना है। अगर अपना अनइक्वल जा रहा है वापस, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, और एट द एंड कर देंगे रिटर्न ट्रू। अगर इन सब में से सही होगा तो this is what my mind says। let's see। क्या हो गया? कॉम्प, ये रहा ना कॉम्प, कॉम्प वेट लेट में चेक क्या, पहले खुद ही देख लेते हैं। reference to node must be called। ओके ओके, राइट, इसमें क्या चेक करना है? चल जा भाई प्लीज। ओके हो गया, हैव टू, ओके, बट इसके अंदर क्या पास करना है? which, let me check what, how do we make call of it? नहीं जाएगी कॉल, ब्रैकेट में नहीं लगते। it makes a call, here a non-static member function should be called। what is this, what is this? right, I added a static, I don't know why it worked, but yes, I did a static here because it was saying that non-static member, non-static member function must be called, so I did a static, I don't know how it worked though। देखते हैं या कहीं पे फट रहा है, नहीं, ऑल राइट, we have to do the brute forces of these also। और अब अगला क्या है? longest bit tonic subsequence। ओके,
strictly increasing and strictly decreasing, both of them, and then you have to return the sum of it. Nice. Okay, so if we go towards the board, let's see. For increasing, what do I want? I have like this. 12532 here, 12532 532. Okay. Uh, 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 uh. Okay, this is my increasing and this is my decreasing. Okay. So can we do like this? At first I solve for these. Okay. No. I will solve for this. Okay. And I will reverse it. And now again I will find the increasing. So what will happen? 2, 3. No. No. But can I do like this? I did longest increasing subsequence in it. Okay. I got 1, 2, 5. I marked them -1 or these, or I will remove them from my array. Now I got 3, 2, and I will reverse it. Let me write find LIS remove elements which are elements from array which are LIS for assign -1, reverse array, and then perform LIS again. So ये क्या कह रहा है कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला तो अपने पास हो गया 1 to 5, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया अपने पास 3 2. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द LIS is longest increasing subsequence. So what am I going to, how am I going to get it? At first I will be here, then I will check all previous of it, then I will be here, I will be checking all previous of it, then again here checking all previous of it. We'll move one by one and get the max length. Okay, and we can have a hash array to find the max, or not max, actual numbers like 1 to 5, the sequence. Okay. Once I will get the 1 to 5. Okay, what am I saying is the next step? Remove element from array which are in LIS or assignment. Okay, so if I got these 1 to 5. Okay, now what am I saying is assign them -1. Yeah, but wait, first of all check me whether I might, no, -1 is not in their array, so yes, we can assign it. It is -1, it is -1, it is again -1, then 3, then 2. Okay, now I will reverse this array. Okay, no need to change the logic for decreasing. Instead of just reverse it, 2, 3, -1, -1, and -1. Okay. But there is also a catch for it.
will tell you after this. So now I can get with the same logic how I got the 1 to 5. Okay, we can get the 2 3. But what if there is an element which was used here, like here is 6. Okay, so 6 will come here also, and it will give -1 here. So when I will reverse it, okay, I won't compute for -1 now. Okay, so no problem, no problem. It won't give any problem, right? Let's try to write it. n हमें दे ही रखा है. Okay, first of all I will make an array vector int caps lock by vector int dp n comma 1. ओके, देन एक हैश वाली रख लेते हैं जिससे कि हम एक्चुअल फाइंड आउट करेंगे कौन कौन आ रहा है हमारे डीपी या अपने LIS में. ओके, n comma 0. ओके, now first of all I will be finding the LIS. It should be less than n 5 plus plus 4 int j is equals to 0. It should be less than or equal to I minus 1. Okay, obviously if we are finding an element, if I am here, okay, so what I am checking that कि इससे छोटे कितने एलिमेंट है इससे पीछे. ठीक है, 1 2 3 4 5. सो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आई विल चेक ओनली फॉर दिस. ठीक है, फाइन, आई विल बी चेकिंग ओनली फॉर दिस, नॉट दिस. ओके, okay, it cannot be empty also. Fine, and both of them should have at least one value, right? Okay, no problem. ठीक है, ये हमने j प्लस प्लस f dp ऑफ, ये सबसे पहले तो अपना नंबर बड़ा होना चाहिए. नम्स में जो अपना i is ahead of j, so I should be getting the nums of j. If I give it prev name, it would be easy to understand. Prev. Okay, so if it is greater and in dp of I, dp of prev plus 1 है, like if this is my, इसी को रख लेते हैं. राइट, सबसे पहले हमने dp को असाइन कर रखा है पूरी को 1. ओके, राइट, dp of n1. ठीक है, so when I am here no loop will run because prev is 0 and prev should be less than or equal to I minus 1. I minus 1 take it to the minus 1, so it is not possible to run it. Okay, let's move to the next. I am here, I is here, so prev would start from 0. Okay, it checks is I greater than prev. Is the value at I greater than prev? Yes, it is. Yes, it is. Okay, so and also what it is saying, dp of I should be greater than dp of prev plus 1. so dp of I कितना है 1, dp of prev कितना है, ये भी 1 है. और उसके अंदर जब हम प्लस 1 करें तो अगर वो ग्रेटर देन, नहीं, हाँ, नहीं, ये थोड़ा गलत लिख रखा है. हाँ, dp ऑफ I अगर छोटा है, हाँ ठीक है, अब सही है, ये गलत लिख रखा था.
अगर ये छोटा है इससे, अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू मिल रही है, so we would assign it. So 1 is less than 2, so we will run it and we will give it 2. Okay, that till now we are getting a LIS of 2, which is 1 2. It is only till here. Okay, let's remove wait. Now I will be here. Okay, I am here and prev is here. It will ask whether it is lesser. Yes, one, the previous is lesser. Okay, so obviously we can pick its value, so it will assign it 2. Okay, now my prev will come here. Okay, prev will become will come here. Okay, now what? Now these both are 2 and its value is 2 is less than 3 also. And again, if I will take the value of prev from TP, add 1 to it, this one is for the 3. Okay, every time we are adding one for itself. Okay, 2 plus 1 is greater than its current value. Yes, so we will assign it that. So if we will do this iteratively, we will get 5 here. Okay, so same this way what we will do is dp of I is to dp of prev plus 1. Now now with that also I need this. Okay, I need this too. For that we will be having a hash array, which I have already here. Hash of I would be equals to I. Okay, so if I'm updating it, then hash of I should be equals to prev. Okay, now now what I have to do, this is my 1 2 ये पे लेते हैं, कह रहे पहले इसका आंसर 1 2 3 4 and 5. Whenever I will be coming at a value, I will get, okay, I will get the previous, by which I would assign like that only. It would be 1, it would become 2, it would become 3, and it would become 4 with the help of this. Okay, now what I want is the maximum length. If int maxi is equals to 1, at least एक तो हो गई होगा सर से, but they cannot be 1 I guess here. Okay, we'll check it. And both of them should have a length of 1. Okay, 1. So if dp of I is greater than maxi, here I will also have an index is equals to 1 0 obviously. Then what I will do, maxi will be equals to dp of I, and also index will be equals to I. Okay, now what I got the maximum index at which this index will store the value of here.
means 4. 4 would be the index of it. Okay, now I will backtrack at the hash array, okay, to get the sequence. Okay. mm, Length of array is 10 to the power 3. 10 to the power 3 into 10 to the power 3 will go here 10 to the power 6, and we'll do this again. Okay, अगर यहाँ पे अपनी लेंथ ऑफ मैक्सी अगर 1 है, ये मतलब इंक्रीजिंग में कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग में कोई है ही नहीं, so we can return 0. Okay, then no existing increasing sequence. Okay. Okay. Mm-hmm. Now what? We did this. Now we have to backtrack. Vector int answer में सबसे पहले हम पुश बैक कर देंगे। पुश बैक करेंगे हम जो भी नंबर अपने नाम से ऑफ इंडेक्स पे। ओके, ठीक है। जो भी मिलेगा हमें नंबर उसे पुश कर देंगे। वाइल हैश ऑफ इंडेक्स नॉट इक्वल टू इंडेक्स। फाइन। So what index should become hash of index instead of pushback index. Okay, कितना टाइम हो गया? टाइम कहाँ दिखता था? Okay, okay. Now I will reverse it. Reverse answer dot begin comma answer dot end. Okay. Now how can I remove? How to remove a vector from another vectors, right? Using erase. Erase if main vector comma revise अब ओके। यहाँ पे हमें रिमूव पार्ट होगा, रिमूविंग पार्ट। ओके, after this what will happen? I have to copy this
time I only need this. Okay, alright, we'll copy it. ये हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है. dp dp2 ले लेते हैं. ओके, maxi2. ओके, index 2. Do we need index? I don't think so. We don't need this. Okay, we don't need this. Also, we don't need this. अगर ऐसा नहीं है, अगर maxi2 1 है तो 1 तो होगा ही होगा, अपने आप में जैसा होते ही है डिक्रीजिंग वाले. ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस रिटर्न maxi1 plus maxi2 maxi. ओके, एक बारी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ मेरा अप्रोच सही है या फिर नहीं. Did I misunderstood the question? It cannot be like that. If I am saying 1, 2, 10, then I cannot say 2, 4, 11. I found this. Mm, Wait, we have to rethink now. Okay, या तो ये बोल सकता हूँ मैं कि मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ एंड देन इसके बाद कम इंक्रीजिंग कि इंडेक्स तो मुझे पता ही है, दिस इंडेक्स. बट व्हाट इफ व्हाट इफ आई एम हैविंग 1 2 5 3 2. मेरे को इसकी लेवल से चेक करना, बट ये मैं रन कर सकता हूँ. और which at 0. I want to know whether its answer is 4 or what.
answer is 4, so we have to take till 1 2 only, but my longest process is 6. We'll give it as 5. Okay. Mm-hmm. Okay, so if it is like this, 3. Okay, so if I have like this 2 5 3. Okay, so my dp would be what? My dp would be what? 1 2 3 and again 3. Okay. What I will do, after moving like this, I will have one more dp from this side. Okay, it will be 1, it will be 2 with increasing. Okay, till here. Okay, okay. Till here 3 5 2 3 2. It would remain like decreasing, increasing chain आपको, तो it would be 1 3 1. It would again be okay. So this is from this side, this is from this side. Okay, this is what I'm getting. Okay, what I need is, I will be having one pointer of my here and one here. Okay, till the point they are no, I need first increasing and then decreasing. So yes, I'll be first moving from here and then from here. So while I is less than j, this is my I and this is my j. जब तक ये इससे छोटा है तब तक की मुझे वो चाहिए वैल्यूज, राइट. Wait, we can do this too. Okay, I don't need this hash. Okay, I don't need this also. We'll modify it. Wait, first let me remove this dp1 maxi1, remove index, remove hash, remove this, and let me not play with this. Okay, now after generating this vector, what I have to do, I will be generating a vector from that side. It would be till n minus 1. It would start from n minus 1 till this. ये है अभी भी है. Okay, and prev should be equals to, prev would also be equals to n minus 1. Okay, and it should be greater than or equal to, अगर ये यहाँ है, 0 1 2 3, अगर मेरा prev यहाँ है और यहाँ है, तो it should start from here and it should be till I plus 1, right? It should be till I plus 1.
माइनस माइनस नम्स ऑफ आई तो बड़ा ही होना चाहिए, वो सब ठीक है। यहाँ पे प्रेव लिखना है, यहाँ पर भी प्रेव आ जाएगा। ओके, what else, what else, what else? Now I will be having int y is equals to 0 and int j is equals to, how will I move it? How will I get the max out of it? I got 1 1. Okay, if any of them is 1, then increase it. Okay, अगर ऐसे माना जाए 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। जब तक मैंने तब तक ऐड करते रहो, जैसे ही 1 हटेगा ठीक है। ओके, मोबाइल इंट आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मोबाइल i is less than j, no no sense of making them equal. Okay, if while dp of, या इनके वेरिएबल्स चेंज कर दूँ। ओके ओके, जब तक dp of i, तो i को करते रहो प्लस प्लस, आई है। जब तक अपना j माना है तो j को क्या करते रहो माइनस माइनस, ठीक है। अब बात आ गई 2 और 2 की। मैं यहाँ हूँ तो यहाँ, how am I going to get the max? अगर मेरे पास ये वाली ही एरे हो तो 1 2 5 3 2 1 2 5 3 2, what I will get 1 dp1 and dp2, these, okay, this is 1, this would be 2, this would be 3, this
would be 1. My guess would be 3. 1, 2, 3, and this would be 2. Okay, right, right. What about it? Increasing 0. True. 3. अब देखिए, या तो मैं 1 2 ले लूँ या तो इसे 2 3 4 ले लूँ की बात है, ठीक है। Hmm, 2 3 increasing, no increasing, 3 not increasing. I'm here, you are here. It took me here. Now add this. You will get 1 thing for sure. Now increase this. Okay, increase it till it is getting. This is so confusing. मैं यहाँ तक तो आ गया. What if I didn't get anything and the answer is here? Okay. I should get the index यहाँ तक, and then I should run a loop from I is equals to n minus 1 till the index minus 1, and I should get the max value. What do you say? इंडेक्स माइनस 1 तक जाएगा, ये इंडेक्स हो गया अपना. यहाँ तक जो भी से बड़ी वैल्यू मिलेगी वो वोट है. What do you say? I do agree with it. Somewhere it makes sense. But what if I got like this? I'm having 1 2 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay, I have this. Okay. Okay. Will it be coming soon? Is it? I will get 3 from here and 7 from here. ये ठीक है, चलो. पहली इधर से मैक्स उठा लिया एंड इधर से उठा लिया. ये भी ठीक है. देखते हैं, चलो. ये करना है नहीं. But I do need index.
इंडेक्स ऑफ मैक्स। मैं क्या कह रहा था कि हमें मैक्स तो उससे मिल रहा है, बट वी शुडंट बी टेकिंग इंडेक्स। इज देयर एनी केस फॉर इट? इंट सबसे पहले तो इंडेक्स पता करो यहाँ पे। नहीं, ये मैक्स की वैल्यू है ना, तो हमें उसका इंडेक्स चाहिए था। इंडेक्स इक्वल्स टू 0। What if we got a max is equals to 1 only? If it is a decreasing array. If max is equals to 1 return 0। ठीक है, इस केस में ये तो 3 आएगा, बट ये वाला जो आएगा, ये वाला मैक्सिमम इक्वल्स टू 1, यहाँ से रिटर्न 0। ये तो मैंने बोला कि अगर एक खाली होगा तो कोई सा भी अगर खाली हुआ तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से हम लेकर आते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू I। ओके, now I have one value already, now I need the next, and is equals to n minus 1। अरे यार, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? और int is equals to n minus 1, and I should be greater than index colon I plus plus and dp2 of I का मैक्स चाहिए ना हमें। int m is equals to 0 and will be equals to max of m comma dp2 of I, and whatever return the what am I going to tell? id? Nope, I will be returning the maxi plus m. What do you say? Let's see what changes do we need to make. ये सीन है, ये सब ये वाला है। क्यों नहीं यार, सेगमेंटेशन पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पूरा चेंज हो गया अप्रोच धीरे धीरे। कस्टम इनपुट देते हैं हम लिए। ठीक है, अभी भी आ रहा है। सबसे पहले हम 1 लेकर आते हैं, 10। ओके, ठीक है, ये चल रहा है, मतलब यहाँ तक आई गेस इट इज वर्किंग exactly the way we want. Okay, what if I have 2? It should work for this also. Okay, till here it is working. Okay, now what if it is increasing? Pref should not be equal to it now, it should be greater than it.
ओके +1 से तो बड़ा है। ठीक है की बात है। We will start filling it. That's why I don't think we need to change anything here. But still, let's check it. Wait. What your hands? 3, 4, 5. Okay. So till here also it worked perfectly. I am seeing. What I am seeing is 1, 2, 2, 3, 4. बट यार उस चीज़ के अकॉर्डिंग तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जैसे कि 4, 3 तो चल गया 111 ये भी देख लेते हैं। ये 12 हो गई। I need this. Hmm. 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 Should be 8 now. I guess these are 8. 4, 4, 4. Yes. Correct. Should I submit it? Let's see. Oh my god. Lame. First test case. The length is 6. 1, 2, 7. And there should be. Your output is 5. Okay. 1, 2, 7. 1, 2, 9, 10. यहाँ तक बढ़ा। ठीक है वो तो 5 हो गया। ठीक है 3 कहाँ से 2 1 and 4 yes this was I was talking about 1 and 4 and this is increasing. Okay and then this is decreasing but यार ये है क्या 142 इसके अंदर कौन है आंसर कौन है इसके अंदर तो आंसर ही समझ नहीं आया कस्टम इनपुट इसके अंदर आंसर क्या बैठा है वन 4
first of all it should be increasing now. If it first ठीक है, ये तो सही ही समझ। ये यहीं पे कुछ हमें प्रॉब्लम है तो सही करें, दोनों की निकाल के ना देखिए वहाँ पे मैक्स चाहिए। मेटोनिक और व्हाट ऐसे कर सकते हैं यार। ये वाली क्या चीज़ है फिर? तो ऐसे तो अगर देखा जाए ये वाली चीज़ कैसे हैंडल कर लूँगा मैं? If I check 14279, okay, 1 2, this should also be 2 3 4 5, okay, this would be 1 1 1 1 2, and this should be your increasing चाहिए ना आपको, should be okay. So now what I want is if both of them are at equal then I should get the -1. Okay. ठीक है, अभी तो समझ गई कि ये तो नहीं है, ये वाली चीज़ तो नहीं ही होनी इंडेक्स वाली। So I can remove the index from here. It can exist before it too. Okay. So I have to get this, I have to get this and this and then -1. Okay. Now what? You study here and use for every time। चलो एक स्क्वायर लूप चला देते हैं, देखते हैं। and for int y equals to 0 I should be less than n y plus एक j की जगह चला देते हैं, I should be equals to n minus 1। okay, ये तरीका है। और j equals to n minus 1, j equals to n minus 1 and what else? j should be greater than equal to I j minus minus। ठीक है, अब जो भी होगी यहाँ पे उन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं int ones। ओके, if dp of I is not equal to 1
2 j is not equal to 1, then only calculate it. Answer if is equals to j है, ठीक है. So answer would be what? dp of I plus dp of 2 का j minus 1, else what would be the answer here? It would, the 1 won't be subtracted. Okay, and one more thing, let's assign it to 0. Okay. Okay, I need the max from 0. Written. Let's see. Nice. Very nice. Well, 10, 5, 1, 2, 2, 1. Right, this is increasing from here, from this side. 1, 2, 2 and 2. So at first I will be here till here, and what if I take ठीक है, इन दोनों में से कोई वन कहाँ गया? dp of v equals to 1 है. Just continue, don't solve for it. Okay, when I will be here, just move to the next. Will be here 8, 10. Okay, या तो या तो उनके इंडेक्स सेम हो और उनकी वैल्यू सेम हो. And of phi is equals to nums of j, no? Then right. Nice. मेरी तो ऐसे एक करके सॉल्व बढ़िया से करेंगे. ये लास्ट ट्राई करेंगे. 6, 4, 2, 2.
से बॉडी 4 ठीक है चल 1 1 1 1 इधर क्या है 1 2 जैसे ले ले वैसे 1 2 2 2 2 1 1 ओके ग्रीन नहीं है ना 2 8 1 3 आगे जैसे चलूँगा 1 2 2 1 3 4 के 2 + 4 6 5 इसका आंसर 5 है क्या नहीं 4 है 1 8 3 1 0 ठीक है इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग ये आ तो रहा है 5 का ये क्या बकरी हो फिर 10 है क्या वो ओके वाह वाह अरे भाई ओके तो ये है अपना 10 तो इधर से अगर हम अपने स्टार्ट करेंगे तो ये 1 1 1 1 1 इंक्रीजिंग चाहिए ना 1 2 2 1 2 ओके अगर मैं इधर से आऊँगा तो हमें इंक्रीजिंग चाहिए 1 1 इधर 2 एंड देन अगेन 2 नहीं इधर आ जाएगा अपना 3 ऑल राइट राइट then I will come here okay 138 now what's next now 138 is computed already now I will do it for 1 and for 1 it will be if I see increasing in manner it would be 1 then here it would be 2 then here it would be what here it would be 2 again here it would be 3 and here it would be 4 I guess 4 no should it be 4 yes it should be 4 now what now what if I will start from here if I won't compute for it I won't compute for it I won't
wait, not, 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 not. Why? Because I have written here if dp of I is equals to 1 then we will not compute anything for it. Okay, now when I will come at the 2, okay, here 2 plus 1 I would get 3, but I won't get it because there is also one condition mentioned that dp of 2 of j, it can also not be 1, so it would get cancelled, it would also get cancelled, and it would. Now I am at 2. I will come from this side. No, no. Then here. 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Right? If I take 1, 8, 3, 10. Okay. Okay. But what if I get 1, 8, 3, 1? Okay. If I will check this, what I will do, here I and j are same. So in that condition 2 plus 3, if I check this, it would give me 4. If I check this, it will give me 2 plus 3, 5, again 4, because indexes are equal. If I will check for it, there is nothing. We'll check for it, the indexes are same, it would be 3. So from where is this 0 coming? I have to check it. Okay. I have to check who is giving this. Wait, let us first copy the. I guess this will solve the complete problem. Okay, now what? Now if I'm at 9. What? What I will do is, let's see out high. Is it happening before it? Alright, let's see. Let's see. We got 0 and we didn't got high. That means yes, it is being done here. Why? डीपी प्रिंट करवा लेते हैं एक बारी. For auto it in dp cout it. Okay. Now copy this again, move into another line, print the another dp array cout /n. Okay. Let's see. What the hell? What the hell? What the hell does it have? This much element. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. How the hell does it have? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? ये हिला. अच्छा, 0 अपना आंसर है. फाइन. So this is our 3. ठीक है. एक्सपेक्टेड आउटपुट 4 और अपना आ रहा है 0. ठीक है.
तो अब यहाँ पे ज़रा एक बार मैक्सी सी आउट प्रिंट करवा लेते हैं। Okay, we have to take this, right? Now I guess the problem would be solved. It should be. Let's see. Right, the logic was right, but there was some typing mistake. Nice, 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 nice. Okay, let's post it first. Okay, this should be ये कैसे पोस्ट किया जाएगा? पहले ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। LSC फर्स्ट, दिस इज व्हाट LSC फर्स्ट। ठीक है, एंड एक ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। LSC2, okay, and one SS for this too. This is n square, this is also n square, and this is also n square. Yes, it is also n square. So it is 3n square, right? Yes, it is n square, right? LBS, LBS. Let me post it. यार फिर से मैंने इतनी देर अपनी शक्ल लगा रखी सॉल्व करते वक्त। डैम,
अबे कहाँ है गया फोटोज एक LCS दूसरा CS2 ओके ओके नेक्स्ट let's post it. What are the first and second slides? First कैसे लिखा है फर्स्ट और सेकंड स्लाइड लेके छोड़ो longest string chain one and second first and second slide okay what was the approach tabulation right tabulation ही थी ना right tabulation हाँ इतनी जल्दी है दिमाग से निकल जाता है यार ये हो गया अपना फर्स्ट okay and the second was longest bitonic spelling bitonic bitonic right subsequence इसमें भी approach tabulation plus condition like plus tabulation नहीं approach इसका मेन जो लिखा जाएगा LIS plus modification मेन क्या था कि एक तो सॉर्टिंग करनी थी हमें ठीक है एक तो ये हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करी and second was this so these two modifications were there LIS plus sorting plus there was one new condition right and new condition was there right which was वो क्या था अपना the difference of two words should be one yes तो लेंथ में भी वन होना चाहिए और कि उसे इंसर्ट करना भी पॉसिबल हो लाइक जैसे BA और BC है सॉरी तो उसके अंदर बस C इंसर्ट करना पड़े बाकी पूरी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए लाइक BA जो है वो पूरा इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस भी बोलते हैं ठीक है अच्छा वो तो देख ही नहीं रहा होगा चलो ठीक है
और क्या लिखना है हमें, इसका अप्रोच क्या आएगा, LIS from both direction, from both direction। अगर हमें इंक्रीजिंग, पहले हम इंक्रीजिंग चाहिए, then we need decreasing, so we apply from front and then for, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं इंक्रीजिंग पार्ट, इंक्रीजिंग पार्ट के लिए नॉर्मल LIS and then for decreasing, स्पेलिंग क्या होती थी, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग पार्ट के लिए रिवर्स LIS। ऑलराइट, मेक सेंस, ओके, ऑलराइट, ये करना है क्या, नहीं, अच्छा प्रीमियम बुक, ठीक है। यस, स्टैक डाल देते हैं, स्टैक कैसे डालते हैं, स्टैक फाइन, मोर देन इनफ, राइट। should have यहाँ पे थर्ड स्लाइड लिखना था, पोस्ट थर्ड स्लाइड, राइट, क्या है, अच्छा अच्छा, ऐसे नाइस यार, ठीक है। एक तो अभी भी डाला ना, वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, छोड़ो, ये तो मैंने देखा शायद इसलिए बढ़ाना। ओके, अरे यार ये भी गजब पीटी है भाई, चलाना नहीं आता एक तो, ठीक है। तो ये आज का अपना हुआ, ठीक है। एक ही सबमिशन लगा, ऐसा क्यों भाई, एक में कर दिया वो, राइट, वी पिक दिस, बाकी सब सही था, बस ये सॉर्टिंग वाला पार्ट उठा के लाए थे ना, ठीक है। अगला क्या है अपना, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, अगर होगा तो, हो तो जाना चाहिए यार, नंबर ऑफ
यहाँ पे नहीं होगा शायद ये नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस। तो इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है यार, दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लूँ इसमें क्या मुश्किल है। वेक्टर इंट dp n,1 राइट, क्या इंट n is equals to nums dot size, will be performing the same thing for int I is equals to int I is equals to 0 has to be less than, डिस्टिंक्ट तो नहीं बोले ना, डिस्टिंक्ट भी नहीं बोल रखे, ठीक है। then we are easy to go, not to go for int prev should be equals to 0, prev should be less than or equal to I minus 1 prev plus plus, okay, if nums of I is less than nums of I, nums of prev जो है वो छोटा है nums of I से, and what else, dp of prev plus 1 जो है वो बड़ा है dp of I से। Okay, this is it. Here what I will do, dp of I would get what, dp of prev plus 1 ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, लेंथ यहीं पे ले लेता हूँ, maxi is equals to 1, okay, and now after calculating this, maxi should be equals to max of maximum dp of I. Alright, now I will run a loop in my dp for it dp, I will be having a count equals to 0 if it equals to I maxi, then we will increase the count, and at the end I will just return the count, okay. Oh my god, damn, oh my god, damn, right, ew, 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 output I have 1 ऐसे क्यों, wait, let us analyze it, let me analyze it, फिर से भाई पहले नाम एक बार यहाँ पे प्रिंट करवा ले, क्या प्रिंट करवा ले, सी आउट इट, ठीक है, एक बार फिर प्रिंट करवा लेते हैं, कोड कोड 1 2 3 3 4, ऐसा क्यों आ रहा भाई, 1 3 5 4 7, इतना गलत कैसे हो सकता है, 1 ठीक है, 2 ठीक है,
Okay. Now I got it. Okay, now I know it. Why it is not easy. Right. So if do I need a count also? Do we need a count also there with it? If this is not max like this or like here, even if it is equal, I don't have any problem because I have to assign it. Okay. Let me have an array of comma count and comma 0, right? Now in this what I will do, तो अगर इक्वल भी होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। काउंट ऑफ आई को प्लस प्लस करेंगे, तो ये प्रिंट करवा लेते हैं और साथ ही साथ इसे भी प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? ओके, नाउ लेट्स सी debug. अरे भाई चिल मारना। लेट्स सी। ओके, ये कर दिया। अच्छा कॉपी किया था ना टेस्ट रिजल्ट। काउंट। ओ माय गॉड, 0 1 2 2 4 how how is this possible? 1 2 तो आने का मन था, ठीक है। 1 2 3 1 3 and rewrite. अगर कुछ ओके वेट, अगर ऐसा हो रहा है ना, लाइक इफ यू गोट अ न्यू वैल्यू, तो काउंट ऑफ आई को करो 1, ठीक है। और अगर यहीं पे यही सेम चीज़ हो रही है ना, else if अगर यही सेम चीज़ हो रही है, अगर वो ऐसा ऐसा मिल रहा है ना आपको, इफ इट इज रिपीटिंग देन बड़ा होगा काउंट आई का, ठीक है। लेट्स सी, नाउ इट इज परफेक्ट।
So now I need the index, and yes, let me remove it. Now I need just index, int and is equals to 0. Mm, 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 mm. Wait, let me check. Yes, this was I was talking about. If maxi is equals to और greater भी है ना dp of I से, ये भी दिक्कत है यहाँ पे. वेट, ये सारे ना वन भी होने चाहिए, ये सब वन होने चाहिए. मतलब ये वाला तो सही से मैनेज हो जाएगा अपना, बट दिस वन इज द प्रॉब्लम, राइट? दिस वन इज obviously I can return the index in this case. Okay. This is possible. Now what I will do about this one? If is it that possible? No. So every time count of 0, वो तो रन करेगा ही नहीं ना. It should be lesser, right? तो चलो यही करते हैं पहले. यहाँ पे उठाओगे आई, फिर वहाँ पे उठाओगे, वहीं पे आएगा. इंडेक्स शुड बी इक्वल्स टू आई. ठीक है, सी आउट करवा देते हैं इंडेक्स. तो अपना इंडेक्स आया 0. यहाँ पे भाई जरा ये बताओगे. ये सब ठीक है अपना यहाँ तक, ठीक है. राइट. नाउ
you have to do is I want to add a test case. What if there is the 2 comma 1 comma 1 comma 1 comma 5 0 okay sorry okay ठीक है चलो ये चीज़ कर सकते हैं हम देन अगर अपने 2 भी आ रहे होंगे ना तो ये हैंडल कर लेगा जहाँ तक मुझे समझ आया है कि अगर अपने 2 भी आंसर आ रहे होंगे समहाउ तो ये उसे हैंडल कर लेगा अगर 2 लेंथ के आ रहे होंगे तो आई मीन टू से दैट यस राइट जैसे आई वाज सेइंग कि अगर उसके पास 2 लेंथ के हैं अगर एक लेंथ का आएगा ना अगर अपने पास मैक्सी ही if maxi is equals to 1 है ना then what I will do is return the n c right and if I will do 0 0 then also it would be fine right now in this case what am I saying to it is just give me the index if maxi is greater than dp of I sorry if dp of I is greater than maxi मैंने लास्ट टाइम उल्टा ही लिखा था dp of I and सभी I right and index is equals to 0 right what I have to do is now count of x right let's see at what case it will get fatigue let me check 1 2 1 2 4 3 5 4 3 5 4 7 2 right at first it would be 1 it would be 1 right if I will print them for auto hit ndp cout 8 cout /n copy this again just replace it with count okay now let's see first one right then 2 यहीं पे करते हैं अपना वो बेहतर ही है 1 2 3 3 1 2 4 5 4 the next what would be there 4 है ना 1 2 4 3 it would be 4 plus 1
5. This would be over 2. Ready? Am I right? 1 2 3 3 4 4 5 2. राइट. वैसे अगर देखा जाए ना तो हम ये भी कर सकते हैं. है जी. 3 3. एक तो वो खुद नहीं, ऐसे थोड़ी होता है. होगा तो यही ना. कितने काउंट आ रहे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? तो 1 2 3 5 7. ठीक है. 1 2 4 5 7. Okay. Now this one. 1 2 3 4 and 7. Right. So at first I will reach it from here. Okay. Right, right. समझा मैं समझा. So every time you reaches it, if it is new, if I see a count, right. Right, right. At first the count for it should be 0, right? Or it should be 1. Then I will come to it. I will ask 1 4 2 4. At first I will assign it the 1 plus 1, and this will assign it 1 plus 2. It will get 2. I will come here. I will ask 1 3, then 2 3. Okay. It would be 2 plus 1, right? No. वो तो करना तो साथ ही पड़ेगा. ये बनने के बाद पॉसिबल. ये बनने के बाद पॉसिबल नहीं. Okay. We need to have a count like this only. Then only it is possible. If I am at 1, then I will get 0. If I am at 2, I got 1. Now when I am at 4, okay, I need 1. Okay, it will give me 1 plus 1, right? Then when
I will come at 2. Obviously it should be giving me 1 year, right? Here I should be getting 1, right? 1 to 4. Then I will come to the 1 2 3. It cannot pick up from it. It will pick up from it. It got a new value. It will get assigned 1. Perfect. सो ये तो अपनी सही बात बैठ रही है. इसे 1 कर देना अगर आपको कोई नया मिल रहा है तो. ठीक है. Now when I am at 5, 1 2 4 5 2 3 5. Okay. At first what I will do, 1 1 फिर एक नया आ गया 3 plus 1 था ये 1 2 4 5 पॉसिबल है. फिर मैं 1 2 4 3 1 3 के पास it should be 2. Okay. Now I will come to the 4. 1 2 1 2 1 2 3 4. तो 4 लेंथ का ही बैठ रहा है नहीं तो 1 2 3 4 4. Okay. So it will pick it will obviously be 1 only first time it will. Now the thing is, if we go to it again, now the thing is here. Okay, I came from 1 2. It doesn't matter. 2 2 1 2 3 4 1 2 4 5. सबसे पहले तो 5 ही देगा. ठीक है. 5 के पास कितना है 2, तो ये 2 देगा उसे. पहले सबके सबका काउंट 0 होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. 2 तो दे देगा. चलो ये इसे 2 दे दिया. Now what about it when I will give it 1. वो ठीक है. बट अच्छा एक तो ये वाला हो गया. ठीक है. Is it like that? Is it like that? जो एक तो अपना यहीं पे काउंट हो गया. बाकी जो आ रहे हैं अगर वो इज इक्वल्स टू आ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ आई प्लस इज इक्वल्स टू जो है ना उसका काउंट ऑफ प्रेव वाला उठा लेते हैं. व्हाट इज से क्या हो गया. नेटवर्क कैसे आ सकता है. सारा कॉपी कर लेते हैं और कर लेते हैं रिलोड. अरे यार गाइस
so it is the time to end. रुको वहाँ देखते हैं नंबर ऑफ इनकमिंग सीक्वेंसेस, यहाँ पे देखते हैं। अरे भाई तू भी भूल गया, वो नहीं है क्या कहीं क्वेश्चन है तो सही, बट तो ये दिख गया यहाँ पे। ये क्यों दिख गया? लॉग इन एक बारी वेट, क्या 1 2 3 है ना? जी तो अलग चीज हो गई। ये नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो अलग है। इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट 0 2 2 2 2 1 3 5 4। ठीक है। ओके, कहाँ है इसका प्रैक्टिस? मेरा जो हम कॉपी करके लाए थे तो पूरे उठा लाए थे यार। सॉल्यूशन पब्लिक, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, यहाँ पे नम्स कर देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। ऑलराइट, एक तो ये प्रिंट भी नहीं होते था भाई। अब ठीक है, देखते हैं। 2 दे रहा है ना? ठीक है, देखते हैं। चलो, अपना क्या क्वेश्चन था? ये था ना, एक बार ये वाला प्रिंट, ये वाले पे कस्टम रन करते। 1 2 4 वेट 2 4 3 5 4 7 2। ये तो बीट नहीं आ रहा यार, तो मैंने ये भी कर दिया। If I am reaching 1 2 4 3, पहले तो मैं इधर से आया 1 2, पहली बारी में 1 हुआ, फिर जब मैं 1 2 3 इस वाले से आया और फिर से सेम बैठ रहा है ना? तो इस बारी मैंने क्या किया भाई, जो वो है उसके अंदर ऐड करवा दो ना। सही बात है ना? पहली बारी मैं आया 1 हुआ 1 2, पहली बारी की बात नहीं है यार इसमें। 1 2 वेट वेट वेट, what I have to do is I have to pick the count here also। क्या पता उस पर पहले ही आ रखे हो इतने, मे बी 1 हो ही ना। अरे भाई साहब, छोड़ो यार, वहीं पे होगा वो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्रॉपर प्रिंट वगैरह करवाना पड़ेगा। आ क्या आ गया? क्या सही है? नाइस, ओके। शो मी दी प्रॉब्लम। 2 1 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, काउंट ऑफ प्रेव,
Oh my god. ठीक है। मतलब ये मुझे पहली बार मिला है ना। We'll solve it later. It's already 3:40. Bye bye guys. Time to end it. Thanks for joining Thorfinn Bhai and 8 to 9 viewers, whoever they were. Bye bye. Time to end. It was a nice stream. ये लास्ट वाला वैसे भी मैं सॉल्व करूँगा, and then from tomorrow we will start DP on partitions. Okay, thank you, bye bye.